Hello students, I hope you are all ready for today's session. Let's start our class. So aji padiba relation between moment of inertia and torque. Moment of inertia linear motion case रे कौन moment of inertia को हमें mass लिखुचे torque को linear motion case रे linear motion force लिखुचे तो ता भीतर रिलेशन का हो F इज इक्वल टू एम ए समझा ना डिफिकल्ट हो रिलेशन जानी चाहिए तो फोर्स जगह कौन पड़ो टॉर्क पड़ो मास जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ो ए जगह एंगुलर एक्सीलरेशन पड़ो ए रिलेशन डाई बाहर करियर अछि बट मन रख गोटे बॉडी जतले रोटेट करूची तापरे दीटा एक्सीलरेशन पड़ुची दीटा लिनियर एक्सीलरेशन पड़ुची नै सर्कुलर रोटेशनल मोशन पाई टू लिनियर एक्सीलरेशंस कौन सपोज ये गोटे सर्कल रे रोटेट कर बोर्डटा एक्सिस टा ये बोर्ड को देखिए बुझ पाला तो बोर्डटा सपोज गोटे इंस्टांट रे बोर्डटा इठी अछि एनी इंस्टांट बुलुची से बुल्ला टाइम मु जस्ट फोटो उठेछि पॉइंटटा इठी अछि एटा तार ओरिजिन टा तो यार दीटा एक्सीलरेशन अछि गोटे होछि टुवर्ड सेंटर जोटा रहउछि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आउट होछि टेंजेंशियल एटा रेडियल हां रेडियल एक्सीलरेशन रेडियल और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन गोटे रोजी आ गोटे रोजी कौन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी को रेट रे चेंज होची दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं मोरे ए अल्फा टा एंगुलर एक्सीलरेशन टा ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सहित रिलेटेड आगु हमें पढ़िचे ओके पढ़िचे एबे से जिनसटा को कैलकुलेट करबा ओके सो नियो कंसीडर ए रिजिड बॉडी सेम जिनस रिपीट कंसीडर ए रिजिड बॉडी गीत था आराम रे मन नहीं रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इंग्लिश सॉन्ग हॉलीवुड सॉन्ग रोटेटिंग अबाउट एंड फिक्स्ड एक्सिस एंड फिक्स्ड एक्सिस कौन पे लिखा होची ढिला एक्सिस रिजिड बॉडी यदि बुलौची भांगियाले मुंह पर बासी पड़ियो ना माडा हबो एक्सिस फिक्स न रखी धर 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 करियो हां एंड पार्टिकल गोटे बॉडी ऊपर एंड पार्टिकल पी बॉडी ऊपर हां पार्टिकल पी यदि रोटेट करूची फिक्स गोटे रिजिड बॉडीटा एक्सिस रे बॉडी तो पार्टिकल टा कोन गोटे सर्कुलर पाथ रे रोटेट करबो नहीं पार्टिकल पी ऑफ पार्टिकल पी पी रो मास होची m रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ जा दे दियो रेडियस स्मॉल r बोल दे दोची ओके ओके फिगरटा कर दबा आगे रिजिड बटा ए वाला रिजिड देखाउस तो एक्सिस टा मोर बोर्ड ऊपर अछि रिजिड बॉडी प्लेन टा मोर ए भले अछि टिके टिल्ट करे देखै छी ने बोर्ड भीतर पसी गछि या पर एनी पॉइंट पी गोटे एटा गोटे पॉइंट पी तो पॉइंट पी टा किने ए भले गोटे सर्कल ले बुलिबो रिजिड बॉडी टा फिक्स ए फिक्स एक्सिस चारि पटे बुलुची तो ए पॉइंट टा मोर सर्कल ले बुलिबो धड़ धड़ हबार नै कार यदि ढिला रिजिड बॉडी अछि तो मु किछ कर परिबिनी ओके तो एटा मोर कोन देछि रेडियस केते देछि रे आर एतिको जिंस तो देछि हां एतिको जिंस गिवन एक्सिस टा नाट दे दबा ए बी
आउ कौन देबा ए पॉइंट टा पी ए डायरेक्शन रे मोर कौन रहइबो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए डायरेक्शन रे मोर रेडियल एक्सीलरेशन ताले रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल केते बाहरिबो रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द एसीसी लिखि डॉट लिखि देउछ माने बुझी जिवो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a r is equal to v square by r एटा हमें पढिचे टिके मन पकेया पड़िबो हां रोटेशनल मोशन केस रे कोन v is equal to r ओमेगा एटा कोन लिनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी आटा को जो रेडियस जो सर्कल बुझी ता रेडियस टा एटा यदि मु पुट कर देबी v जगह रे r ओमेगा तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r तो r को r स्क्वायर उडे कटि जाउची तो r ओमेगा स्क्वायर सिंपल यदि एक्सीलरेशन है इतक तो फोर्स की फोर्स रेडियल फोर्स ऑन p केते फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन p रो मास केते m इज m r ओमेगा स्क्वायर बुझी गलो किछ असुविधा नै तापर कोन रेडियल एक्सीलरेशन देखला तापर देखियो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एई जगह वेलोसिटी टा चेंज केते होची वेलोसिटी भी टेंजेंट काई तमे सपोज एठी गोटे स्टोन टे बांधी छ पी रे सेंटर रे ठिया आइछ थ्रेड टे धरि कि बुलोच यदि एटा छिंडी गला क हबो टेंजेंशियली पळेबो सेई जगह रे जहा वेलोसिटी थला सेई वेलोसिटी रे जीवो सेई मैग्नीट्यूड रे सेई डायरेक्शन रे जीवो ग्रेविटी सपोज नाइ बोली भाबो तमे कहछो ग्रेविटी थले तळु जाय पड़िबो सपोज ग्रेविटी नाइ तमे एंदी बुलोचो तो जोटी छिंडला सेटू टेंजेंशियल ही पळेला दैट्स ऑल तो किंतु जदी किछि एक्सीलरेट होउची तले ई जगह रे वेलोसिटी मोर चेंज ही जाउची प्रत्येक जगह रे टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज ही जाउची कारण एक्सीलरेशन अछि माने प्रथमे धीरे धीरे बुलता तापर धीरे धीरे स्पीड ही जीवो बुझी पाउछो नहीं तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल लॉ p p is equal to टेंजेंशियल ठीक अछि को रेट रे तार वेलोसिटी चेंज होउची dv by dt लिख दे परबी लिखि परबी ना नहीं ओके ताले टेंजेंशियल फोर्स देन टेंजेंशियल फोर्स इज केते मास इनटू एटी किछ असुविधा नहीं दैट इज इक्वल टू मास इनटू dv by dt दैट इज मास इनटू d by dt ऑफ बीटा कोन लिखुचे r ओमेगा दिस इज अ रिजिड बॉडी फिक्स्ड एक्सिस चार बडे बोलुची तार h पार्टिकल गोटे पर्टिकुलर रेडियस रे बुलिबो नहीं फिक्स्ड रेडियस रे बुलिबो जो पार्टिकल ला बुलची तार रेडियस चेंज हबार नहीं तो r टा मो पे कांस्टेंट जेहेतु चेंज होनी तो r टा मो d by dt रो भिड़ देई बाहर को किछ असुविधा नहीं दैट इक्वल टू m r d ओमेगा by dt rate of change of angular velocity that is angular acceleration m r alpha angular acceleration clear negative doubt बुझी पारलो तो ओके तापर नेक्स्ट आमे फोर्स जानले बर्तमान ता जो टॉर्क बाहर करिया टॉर्क या जो रेडियल एक्सीलरेशन रेडियल फोर्स जो टॉर्क ड्यू टू रेडियल फोर्स ता केते थिला केते बार करथिले m r ओमेगा स्क्वायर रेडियल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर ए फोर्स जो को अबाउट एक्सिस ओके एटी इंटरेस्टिंग केस मन पकाओ आमे टॉर्क रो स्पेशल केस पड़थिले कोन जदी फोर्स टा इंटरसेक्ट करची एक्सिस को फोर्स टा संभाव इंटरसेक्ट करची आडू जाईची कि एगुलो जाईची जोटा कि ताको एक्सटेंड करले एक्सिस को जदी इंटरसेक्ट करला तो सेही फोर्स जो किछि टॉर्क आसीबो नाही ता माने जदी मोर एटा डोर टा फिक्स अछि मैं डोर टा बुलेबी मु फोर्स दोची एई भलिया जे एई भलिया फोर्स दोची
वो फोर्स डायरेक्शन टा डोर सपोज एक्सिस एटा या देगी जाउची और ताकू टाणुची त माने सेटा भी एक्सिस देगी आसी तो से केस रे कोन हबो मो डोर बुलीबनी से कंडीशन टा इटी पडिबो नहीं इज अबाउट एक्सिस इज 0 because company because this force in intersects the axis को intersect करची तो घंटा बुलेबनी बुझी गला तापर देखो नेक्स्ट कौन आ गोटे फोर्स रहला रेडियल फोर्स ओके ए सेम जिनसटा एठी चित्रटा करछि एटा सर्कलटा मोर एई भला थिला ए सर्कलटा मु एंद बुलेई दिछि एठी नै थोइली मो रेडियल फोर्सटा सॉरी टेंजेंशियल फोर्सटा रेडियल फोर्स कोन पय कहछि दैट इज टेंजेंशियल फोर्स हां टेंजेंशियल फोर्स तो टेंजेंशियल फोर्सटा मोर एई डायरेक्शन रहला रेडियसटा मोर एटा हम काट देली एटा मोर रेडियसटा एटा एई डायरेक्शन रहला रेडियसटा नै एई डायरेक्शन है जी ता भीतर एंगल रहला एटा 90 डिग्री बुझी पारलो टॉर्क कोन बाहर जी हां एटा कोन टॉर्क ड्यू टू 80 तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू कोन r क्रॉस f खाली मैग्नीट्यूड लिखुची r क्रॉस f छड दियो r क्रॉस f रो मैग्नीट्यूड तो r ए डायरेक्शन ने फोर्स ए डायरेक्शन ने एंगल डाला थीटा टा 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री हेले sin थीटा 1 हे जीवो तो टाउ टा मोरो तो एबे टाउ टा केते को f sin 90 that is equal to r को r रहला f टा केते टेंजेंशियल फोर्स टा mr alpha into eta 1 that is mr square alpha टेंजेंशियल फोर्स टा आसला टेंजेंशियल टॉर्क ए टॉर्क टा केते आसला मोर m r square alpha ओके तो एटा हम कहां पे बाहर करले गोटिए पार्टिकल पे बाहर करले तो रिजिड बॉडी रे सिंथ मेनी पार्टिकल्स अछंती कितना का पार्टिकल्स अछंती सो टोटल टॉर्क ताल बाहर करिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस एरी बड़े नहीं ए टॉर्क टा मोर एक्सिस r क्रॉस f टा परपेंडिकुलर होबो ना r क्रॉस f परपेंडिकुलर जोडे एक्सिस से अलोंग एक्सिस ही होबो मोर डायरेक्शन टा हम जानि छी ओके टोटल टॉर्क टा केते होबो टाउ इज इक्वल टू एटा पार्टिकल पय लिखि देली टाउ इज इक्वल टू समेशन सब जा पार्टिकल ऊपर मु सम कर देबी सब जगह मास एति गय होबो नहीं अल्फा टा सब पार्टिकल पय कांस्टेंट तो मते लिखिया दरकार नै किछि आई लिखिया दरकार नै सब पार्टिकल पय कांस्टेंट सब पार्टिकल मास डिफरेंट हे पारे ताका रेडियस निश्चित डिफरेंट हबो नै कि जो सर्कल ले बुलथि ताका रेडियस डिफरेंट हबो तो ए जिंसटा मु पाई गेले बट समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर टा केते ए पार्ट टा केते मोर मास इनटू रेडियस रो स्क्वायर एक्सिस रो डिस्टेंस टा जो पॉइंट रोटेशन करछुंदी दैट इज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोर्स नहीं दैट इज i alpha so tau is equal to i alpha एटा खुस्तिल तो एटा हम खुस्तिले तो रिलेशन ना पाई गेले अल्फा टा एंगुलर एक्सीलरेशन एटा कहा से तो को एक्सीलरेशन से समान लिनियर रो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से समान इन सरा मन रखुता ओके बुझिला हां आ तो देखि दियो ओके ए जो टाउ टा देखो टाउ टा को फोर्स जो होछि ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो होबो टाउ आसीबो नै एटा नोट करो इंटरनल फोर्स जो नुओ
मैं आगु पढ़ी एक्सटर्नल फोर्स जो ही एक्सीलरेशन आसीबो सिस्टम रो कि बॉडी रो तो सेति टाउ इज टोटल टॉर्क इज ड्यू टू ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं सो इति लिखि परिबो गोटे नोट करि परिबो नोट द टोटल टॉर्क is due to only external forces acting on the body वाह गोटे लाइन हे गला कंप्लीट ओके नोट डाउन एबे देखिया न्यूटन्स लॉ इन रोटेशनल मोशन हमें न्यूटन को तीनटा लॉ पढ़थिले इन लिनियर मोशन केस रे एबे रोटेशनल मोशन फर्स्ट लॉ कौन कौच आम से पाठ पढ़ा आम कंटिन्यू करुचे जे पर्यंत आमको मोबाइल किसी डिस्टर्बेंस आसीनी नहीं से पर्यंत आम पाठ पढ़ा कंटिन्यू करछे मोबाइल ही आमको डिस्टर्ब करुचे पाठ पढ़ार अधार उठाऊँ सेम जिनस ये तो एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी गोटे जिन मन रख यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी लिखनी यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन लिखनी हाँ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी may not be always मन रख यूनिफॉर्म एंगुलर की रोटेशनल जहां भी लिखली रोटेशनल मोशन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहला माने हम गोटे एक्सिस को थ्रू एक्सिस कह अबाउट ए गिवन एक्सिस सी केबे चेंज करबनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस केतेला चेंज करबो अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल अगरु फोर्स थला बे टॉर्क हे गेला to change that state is this statement गोसी मन रखा था आगु गोसीचे फोर्स जगह टॉर्क करिया कथा वेलोसिटी जगह एंगुलर वेलोसिटी को पकाया कथा ओके एटा जानला देखो एई जिनसटा हम कहउथली कोन कहउथली यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी माने ओमेगा कांस्टेंट एई केस रे होची ओमेगा इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन रे अल्फा कांस्टेंट भी हम करि परबी अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट रोटेशनल मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो तो गोटे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जाउची एंगुलर एक्सीलरेशन करूची कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन करूची माने अल्फा कांस्टेंट हेले ता माने ओमेगा चेंजेस विथ टाइम तो ये पॉसिबिलिटी अछि तो दिस स्टेटमेंट इज ओमेगा चेंजेस विथ टाइम कोचे एथरे ओमेगा कांस्टेंट बोल कोचे ताले ए दिटा का मोबाइल समान सब केस रे नइते पारे तो ए केस रे भी मु कहि परबी जे अल्फा 0 इज आल्सो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन ए केस रे हे पारे अल्फा कांस्टेंट चेंज होनी माने 0 भी नहीं जे कांस्टेंट वैल्यू चेंज होनी नहीं कि तो ए केस रे मोबाइल ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट हे गेला ए केस पई ए दिटा का समान हबो तो सेति पई मु केवल स्पेसिफिकली मेंशन करछि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी बुझी पारलो कंप्लीटली then we will go to the second law the rate of change of कौन थिला मोमेंटम थिला एठी हला एंगुलर मोमेंटम तुम एंगुलर मोमेंटम पर्यंत पढिनो नहीं सेठी जे p लिखा होतला लिनियर मोमेंटम ए केस रहउची l नहीं डामे पढिबा ओके तो p इज इक्वल टू हम पढुथले p इज इक्वल टू mv मास इनटू वेलोसिटी एठी सिमदी I इनटू ओमेगा आई जीवो नहीं मास अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिनियर वेलोसिटी जगह एंगुलर वेलोसिटी ए रिलेशन टा आसीबो मन रखि तो किछि असुविधा नहीं सेम जिंस ओके तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम माने d by dt of l मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क जितिका टॉर्क पड़छि से अनुसार तर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो ऑब्वियस जिंस एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ जो डायरेक्शन में टॉर्क पड़ुछि सेही डायरेक्शन में ही मोमेंटम ना चेंज हबो बुझी पारलो एतियो खाली कहिछि जदि बॉडीटा एबळा मोशन करछि लिनियर केस नहीं जा लिनियर मोशन केस नहीं जा तो ए डायरेक्शन में फोर्स देली तो ए डायरेक्शन में तार मोमेंटम टा बढ़िबो बुझी पारलो
और जदि सपोज बॉडीटा ए डायरेक्शन आसुची मु ए डायरेक्शन फोर्स देली ताले कोन हो आबै को ए डायरेक्शन मोमेंटम बढ़िबो कि एपर डायरेक्शन मोमेंटम बढ़िबो माने धीरे धीरे मोमेंटम तार जहा थला कमी जीवो मु मोमेंटम टा एपडू देली फोर्स टा एपडू देली मोमेंटम टा आगु एपडू थिला ता माने कमी जीवो भाव गोथर आगु हम डिस्कशन भी करिचे ओके तो सेम जिंस हां रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ता माने दैट इज d by dt l रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को टाइम अनुसार को रेट रे चेंज होजी dl by dt जस्ट एटा को dl by dt भी लिखि परिबे किछि असुविधा नै हां टाउ इज इक्वल टू dl by dt ओके तो l टा कोन i ओमेगा लिखि परछि तो d by dt ऑफ i ओमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिने मास टा कांस्टेंट गोटे एक्सिस टा फिक्स अछि से एक्सिस चारि पर रोटेशन करूछि ता ऊपर टॉर्क दिया होछि तो किंतु तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया टा चेंज होबनी बॉडीटा रेस्ट रे थाउ कि मूव करू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डजंट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी कारण i r स्क्वायर ऊपर डिपेंड करछि तो एटा मु कांस्टेंट नै गेले बाहर को नै गेले तो d ओमेगा बाय dt इति कहि गेला दैट इज i इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज angular acceleration so tau is equal to I alpha so tau is the total external torque internal जो तार किछि भी चेंज होबनी चेंज होबो किंतु तार कोन तार एक्सीलरेशन आसन त वेलोसिटी चेंज होबनी सिस्टम रो ओके So tau is the total external torque applied on the body. I is the moment of inertia of the body about the given axis. जो axis given अछि सेटा लिखिया पड़ो से about that axis I axis change हेले I भी change होछ हम जानि छै ओमेगा और अल्फा are the angular velocity and angular acceleration respectively एते कथा सेकंड लॉ बुझि पालो तबे थर्ड लॉ इज द एंटी गांधी लॉ नहीं एंटी गांधी लोक बुझी पालनी गांधी कौन कहते गोटे गाल बाड़ेले आर गाल देखा दब नहीं किंतु ये किसी अलग हो टू एवरी टॉर्क देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क सिंपल जिनसटा नहीं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन से जिनसटा ए लैंग्वेज रे ही लिखा हिची एग्जैक्टली बुझा न पड़ी पारे तुमको हां गोटे एक्शन हेले एटा टॉर्क एक्शन हेले आर टॉर्क होची रिएक्शन बुझि परछो तुम जने ठोगिना बाडेला माने तुम गाल भी ता हाथ को सेति जोर बाडेला सेटा रिएक्शन एटा रिएक्शन नै गोटे गाल बाडेला पर आर गालटा देखि अनेक बस्तियो बाडेबु से छाड़िबो तो सेटा रिएक्शन नै तो थर्ड लॉ न्यूटन एंड गांधी डू नॉट कन्वर्ज टू द सेम स्टेटमेंट ओके बुझिलो बुझी पार्थिबो ओके विल नेक्स्ट प्रोसीड गांधी का नियम और न्यूटन का नियम विषय पढ़िले तमे हम पप्पू विषय जानिचो मिस्टर पप्पू ये इंडिपेंडेंस टाइम रे गांधी के सहित यात्रा करथिले ए पर्यंत भी अभ्यास अछि भारत यात्रा रे आरी पडुछंदी मिस्टर पप्पू ओके सुभाष बोस को डायलॉग कौन थिला मन अछि आह्वान कौन करथिले यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नहीं पप्पू भी से रैली रे पळे आसला मु खून देबी हेले खून तो देबी किंतु बोस तो कहलेनी को ग्रुप रो ब्लड ग्रुप रो दरकार से बुझी पालानी से लागे ताकू लागला बोदे बोस को शॉर्टेज अछि ब्लड नहीं कि काहा पय रक्त मागुसंदी नहीं मुंडाटा बुझी पाउनी आज पर्यंत भी बुझी पाउनी तथापि बुलुची चारियाडे हाँ तमे जो पप्पू विषय भाव मुझे से पप्पू विषय कहनी एटा मोर मो इमेजिनेशन ना पप्पू हाँ तमे कुआड़ किसी यार भाविल आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट हाँ दैट इज ए फिक्टिटियस कैरेक्टर ओके सेतिक हला नेक्स्ट एबे पढ़ाबा आसीबा जस्ट या पूर्व आम कौन देखिले एंगुलर मोमेंटम विषय कहते तेज पढ़ा बर्तमान एंगुलर मोमेंटम नहीं ओके तो डेफिनेशन पढ़िले एटा लिखि परबा दिस इज
angular momentum is defined as the moment of momentum. नहीं, this is defined as moment of momentum. केतुरा टर्म पढ़ले moment of momentum is angular momentum, moment of force is torque, moment of inertia is moment of inertia. नहीं मास जगह यूज करछे हां तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स ये दीटा को देखो सिमिलर फुटिंग रे चलिबे कंपेयर करियो दीटा को हां तो देखिया एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल टॉर्क को मन पकाओ हां एंगुलर एटा को एम लिख दोची नहीं एम पीएम एंगुलर मोमेंटम of a particle angular momentum माने का चारि पटे रोटेट करथुवा हां about a point o जे कोन छोटा पॉइंट चारि पटे बोलुचे is defined as L is equal to R cross P. P is the linear momentum particle. नहीं P is the linear momentum of the particle. R कौन is the position vector. नहीं position vector of the particle with respect to O. O point रू एंड कम चललानी कोन बुझी पारला तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी दीटा वेक्टर रो क्रॉस प्रोडक्ट हेची ताले यार डायरेक्शन का हो बोथ r को भी परपेंडिकुलर हबो p को भी परपेंडिकुलर हबो हां ताको जदी हमें मैथ मैग्नीट्यूड खाली लिखिबा हां मैग्नीट्यूड खाली लिखा l = r p sin थीटा थीटा टा कोन एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड p वेक्टर बुझी पारला सेम जिंस टॉर्क बळिया नै कि एटी r f sin थीटा आस्तला r क्रॉस f आस्तला ताको मोमेंट ऑफ फोर्स कहउतले एटा मोमेंट ऑफ मोमेंटम ओके तो एटा गोटिए पार्टिकल भाला सिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स गोटे पार्टिकल तो सदा रही बोली माने नहीं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स गोटे सिस्टम रे मेनी पार्टिकल्स थाई पारंती हां किमति लिखिबा सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ देखो गोटे जिंस लगुची एंगुलर मोमेंटा मोमेंटम रो प्लुरल टा होची मोमेंटा एस लाइदा नहीं कैट रो कैट्स गोरो गोज एवला इंग्लिश करबनी हां गोरो गोज नो एंगुलर मोमेंटम कैट रो कैट्स डॉग रो डॉग्स हिंदी मोमेंटम रो मोमेंटा एंगुलर मोमेंटा को लिखली एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स सब इंडिविजुअल पार्टिकल मानकर जहा एंगुलर मोमेंटम आछि समानर समस्तंकर वेक्टर सम आछिबो नै वेक्टर सम आछिबो तो एंगुलर मोमेंटम L = summation of I Li = summation of I Ri cross Pi बुझिला पिला नहीं इन each particular Li I number particular Li 1 number particular L1 सेकंड पार्टिकुलर L2 L3 L4 इंदे अछि तो तार सब जाको सम करा गेला समेशन हम पढिचे जानिचे इनसेटा हे गेला ओके तापरे फिगरटा कर दवा ठीक नहीं फिगरटा कर दवा सपोज पार्टिकल इथे अछि p पार्टिकल ना एटा मोर ओरिजिन दा अबाउट दिस ओरिजिन बाहर करछ हां पार्टिकल भाबी दे ए डायरेक्शन रे v वेलोसिटी जाउछ v वेलोसिटी होस तर v ओके पार्टिकल दा p
तो तार रेडियस टा पोजीशन वेक्टर टा एटा मो पे रेडियस से जो ओपी टा वेलोसिटी v जानली तो मोमेंटम p इज इक्वल टू कोन मोमेंटम p इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी विथ रिलेशन p इज इक्वल टू mv जानिचे ताले देखो ताले l टा l वेक्टर इज इक्वल टू OP क्रॉस द मोमेंटम OP क्रॉस मोमेंटम ना कहते m मास इनटू वेलोसिटी और L इज इक्वल टू OP टा R mv sin थीटा OP टा मोर R टा मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड लिखली मैं ओके याको मैं एक्सटेंड कर दूची ए वाला एक्सटेंड कर देली ठीक है ला या पर गोटे परपेंडिकुलर टाइम देले एटा OP और नाडे दे दबा ए एटा R वेक्टर टा तो पुरु वेक्टर टा ऐड देची तो ए एंगल टा मोर थीटा R वेक्टर आउ V मोमेंटम भीतर एंगल बा मोमेंटम रे जहा डायरेक्शन वेलोसिटी से डायरेक्शन भीतर एंगल इज थीटा एटा यदि थीटा हला एटा तर अपोजिट एंगल एटा भी थीटा तो ए ट्रायंगल भीतर ट्रायंगल ओ एट लिखि दउची ओके ट्रायंगल लिखुची OAP ट्रायंगल भीतर sin थीटा इज इक्वल टू केते sin थीटा इज इक्वल टू एटा P बाय H तो OA बाय OP that implies OP टा मोर केते R टा that means OA is equal to R sin theta OA टा हो जी मो पे R sin theta भूल कर देली की ओके तो सपोज एटा को मु D दे देली हां that implies D is equal to R sin theta तो D टा कोन D टा हो जी perpendicular distance from O to the line of velocity direction of velocity जो direction रे velocity रही छी ताको perpendicular distance मु लिखि परिबी कोन लिखि परिबी चले इति पकाओ that is notation टिके पफट कर देस तो मु notation रे जते मु रही जाउची हां तो r sin थीटा टा मो पे d ताने MVD आसिला किछ असुविधा नै d is the perpendicular distance of the line of D is perpendicular distance from the line of motion from O एटा लाइन ऑफ मोशन ए डायरेक्शन लाइन है टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओ रु एतिक जानि पारली नै कि L is equal to MVD करि परिबो जदि जनरली हमर R यूज हुए नै कि ए जगह को R यूज हुए ओके जदि मैं एटा को R न नै एटा को R नै गेली हां OP जगह रे OP लिखिली तो O एटा मो पे R हे गला हां O एटा मो पे R हे गला एटा वो OP sin थीटा इट इज R तो OP sin थीटा तो OP sin थीटा टा एटा R टा मोर एटा मोर OP रहइबो OP sin थीटा टा मो पे R हे जइबो मुडे नोटेशन दे बारे किछ भूल है ठीक अछि हां R दे दिले ए वाला खाली फिगर टा चेंज करले तो L इज इक्वल टू MVR एटा मन रखियो इजी R टर्म रे मन रखियो इजी सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR फॉर्मूला टा मन रखो मन रहबो मेन बेस फॉर्म टा हला इटा देखो एठी मु कोन लिखि छी गोटे इंछ मन पको अबाउट ए पॉइंट लिखि छी अबाउट एक्सिस लिखिली जे टॉर्क लिखुतली मुझे अबाउट ए पॉइंट जानली गोटे एक्सिस जदि पॉइंट देखि जानची अबाउट दैट एक्सिस मु बाहर करि परबी ओके एडा हमें नेक्स्ट क्लास रे करबा ओके
Let's meet in the next class.